ओके चलो फटाफट who are present. I hope all the students will enjoy today's session because today we are going to see the comprehension part of UPSC, and these comprehensions actually they come in CSAT exam. See, in UPSC the first exam is prelim, you know. I'll make another video explaining all the steps and their syllabus also to make you understand what is UPSC and how a complete year from UPSC prelims to interview, you will come to know each and everything in this journey. So prelim exam, it has two papers. Paper 1, GS. And paper 2 is of CSAT. CSAT, here general studies. This means general studies in which all your subjects like history, geography, polity, economics, everything coming under GS, general studies. And CSAT means civil service aptitude test. So in this CSAT, actually the major part of CSAT paper is of comprehensions and maths, school-based maths up to matriculation level. So comprehensions is a very important part. Comprehension means in your school also you study the comprehensions, means passages. A passage is given, accordingly you will have to find out the correct answer, right? So 4 options are given. Out of those, 1 or 2 are correct, 1, 2, 3 are correct, or only 1 is correct. Like this the questions are coming. So accordingly we'll study. So first of all we are going to study comprehensions here, and comprehensions में सबसे पहली बात important हम क्या करें, हम देखने जा रहे हैं डायरेक्टली PYQ की कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर देखेंगे. आप बोलेंगे सर हम तो 7th 8th के स्टूडेंट्स और इतना बड़ा लोड हम पर क्यों दिया जा रहा है? तो आपको लोड नहीं दिया जा रहा है. इसके बाद में जो है तो धीरे धीरे स्लोली आपके लेवल की कॉम्प्रिहेंशन से भी हम शुरू करेंगे, लेकिन लेटर. सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी में आने वाले कॉम्प्रिहेंशन कैसे होते हैं, कितनी डिफिकल्टी लेवल होती है. और अगर आपको पता चल जाए इसी उम्र में कि भाई ये तो मैं कर सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो प्रीलिम एग्जाम पास करने के लिए जो चाहिए वो अभी से शुरू करना है हमें, राइट? तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे अभी. सो वी हैव सिलेक्टेड फ्यू कॉम्प्रिहेंशंस from PYQs, previous year's question paper, and we'll discuss about those comprehensions here, how to reach to the correct answer, that we'll see now. Okay, are you ready? Okay, I'm not able to find where to see the comments. Yeah, now this one is the first passage here. Passage means comprehension only. Yes. Okay, good morning Sangram, Indrani also good morning. Only 2 of you are present. Where are others? Let it be. शुरू करते हैं. Read the following passage and answer the questions that follow. Your answers should be based on the passage, right? Sometimes, अब ये sentence जो है ना, इस sentence का meaning क्या होता है? Your answer should be based on the passage. That means, कई बार ऐसा होता है कि alternatives, some alternatives you find that they are right, correct, but they are not mentioned in the passage. That means they will not form the answer. The answer has to be drawn from the passage only. That is the part to be noted here. Now let's proceed.
Yes. Om. Good morning. Let's begin. All actions, read this carefully along with me. I'll go slow and slowly. Okay. All actions taken to address climate change ultimately involves costs. See here, climate change, they say. All actions taken to address. To address means what? To solve. To solve. To solve climate change. So climate change, you know very well. So today's climate changes are global warming, pollution. Those are the climate changes. To solve this climate change ultimately involves what? Costs. Cost means कीमत लगती है भाई, भारी कीमत चुकानी पड़ती है. That means a lot of funds are required. So many different effects. They are also the outcome of this process. Then funding is vital for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plans and projects. Mitigation plans. That means जितने भी climate से related pollution वगैरह जो problems है उनसे जूझने के लिए mitigation means उनसे जूझना, उनसे झगड़ना, राइट? उनके लिए जो प्लान्स बनाने हैं और प्रोजेक्ट्स बनाने हैं बड़े बड़े, तो उसके लिए क्या चाहिए? फंडिंग. और इंडिया जैसे देश, अब यहां पर इंडिया जैसे देश मीन्स डेवलपिंग नेशंस. ये बात तो क्लियर हो गई भाई. डेवलपिंग नेशंस को बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है. अ लॉट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. ओके, ये बात तो समझ में आई. द प्रॉब्लम इज मोर सिवियर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. देखो, for the developing countries like India, they say, whatever. See, in our world, some countries are developed completely, like US, England, France, Russia, and India is a developing country, correct? So India is developing and some poor countries are also there. Somalia, South African countries, right? Sudan. So India is a developing country which are likely to be among the hardest hit by climate change. Developing nations जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा climate change का इफेक्ट सहना पड़ता है, ये याद रखना है. Given their need to finance development, क्योंकि फाइनेंस डेवलपमेंट जो है, फाइनेंस वाइज जो डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट का यानी जो फंड है, फाइनेंस है फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस, इट हैज टू बी वेस्टेड. वेस्टेड नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, लेकिन वो खर्च करना पड़ता है. कहां पर? क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए. दैट मीन्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जितना आपके पास फंड्स है, तो फंड्स तो उधर जा रहा है, तो डेवलपमेंट कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ी दिक्कत है डेवलपिंग नेशंस की, लाइक इंडिया. मोस्ट कंट्रीज डू इंडीड recognize climate change as a real threat and are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner with the limited resources at their disposal, at their end, yani on their side. They are trying very hard, they are striving very hard to solve these climate change problems, correct? तो मिडिल, जैसे हम बोलते हैं ना मिडिल इकोनॉमी वाले लोग, वैसे ही देश भी है. डेवलपिंग नेशंस आर मिडिल इकोनॉमी like India, and they are striving very hard because they know the ill effects of climate change. They know what are the effects of pollution, what is the effect of ice melting, right? So due to that, what happened, they actually are trying very very hard to solve these problems, and at that time the funds are limited, obviously. Now, with reference to above passage, the following assumptions have been made. Following assumptions means नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स है जो एक assumption, as an assumption we will consider and read them. Let us read. Climate change is not a challenge for developed countries. क्या आपको ये करेक्ट लगता है पैसेज को रीड करके? बिकॉज पैसेज के अंदर उन्होंने मेंशन किया है डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग कंट्रीज. दैट मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज को अगर फेस करना पड़ता है क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम, दैट मीन्स ये इसका मीनिंग ये है क्या कि डेवलप्ड नेशंस को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? ये आपको सोचना है सबसे पहले. देन climate change is a complex policy issue as well as development issue for many countries. Climate change is a complex policy
issue as well as development issue for many countries. कई सारे देशों के लिए बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है. Then तीसरा है ways and means of financing must be found to enable developing countries to enhance their adaptive capacity. Adaptive capacity means what? हम खर्च करेंगे और बदलते क्लाइमेट के हिसाब से खुद को क्या करेंगे, एनहांस करेंगे. एडेप्टिव कैपेसिटी, करेक्ट. एडेप्टिव कैपेसिटी मीन्स टू एडेप्ट आवरसेल्व्स. बदलते हुए क्लाइमेट के साथ खुद को भी बदलेंगे और उसमें एडेप्टेशन. एडेप्टेशन यू नो वेरी वेल, दैट वर्ड इज कमिंग इन साइंस ऑल्सो. टू एडेप्ट विद द एनवायरमेंट, विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, राइट. सो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा है तीसरा पॉइंट कि वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग मस्ट बी फाउंड टू एनेबल डेवलपिंग कंट्रीज टू एनहांस देयर एडेप्टिव capacity. Which of the above assumptions is or are valid? Now think over this. I'll give you 2 minutes. Then try. It is not easy to solve because it is UPSC level question directly. But just try. I'm not expecting all of you to give the correct answer only because it will not be an easy job for you right now. But still, think over this, and automatically after some days you will come to know, yes sir, we can do this at this level. At only school level, I want you to read all the passages and should be able to solve all the passages. Means CSAT का पेपर आपका स्कूल लेवल खत्म होते होते बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना चाहिए up to 10th. So please read and try to give the answer. I'll give you chance. Take 2 minutes completely. Get me the water, please. Get me the water. Thank you. Okay, you got the time? Get me the correct answer, please. Fast. Have you solved it? Good morning. Did you try for these answers or not? 2 and 3 are valid. Sneha, you're saying. Others? That means your answer is C. Sneha. Okay. Sneha is saying 2 and 3 are valid. Let me see. Once again, we'll read the options.
First option is given, climate change is not a challenge for developed countries. Actually, it is a challenge for the developed country. So that is not the correct answer. But actually its effect is more on developing countries. That is the message given in this passage. That means, so first we will not consider here. Then second one, climate change is a complex policy issue as well as a development issue for many countries. That is the right point. It is an issue. It is an issue for the developing countries. For many countries they have given, right, means because many countries are developing countries are coming in many countries. So they are also included here, and that is a complex policy issue as well as development issue. Then third is, ways and means of financing must be found to enable developing countries to enhance their adaptive capacity. Yeah, this is the very important. Ways and means of financing. Means of financing means funding vagara, right? It must be found to enable developing countries to enhance their adaptive capacity. Their adaptive capacity has to be enhanced. That is very important. Second and third, these are to be considered here. So congratulations, Neha, you got the correct answer. But they are not given, or what? Yeah, on this, sorry, what I did here. Yeah, this is right. Yes. So 2 and 3 are valid. C option is right. Second and third, because first option, even though it was given, but they are not saying anything about the developed countries. That's why we will not consider it here. Okay. Now let's move to the second passage. Passage number 2. Read this passage carefully along with me and try to understand. This one is, you will find something quite difficult. Why? Because it is related to economics, and economics that is also of higher stage. Okay. And inflation. What is inflation? Price rise, in simple word. Price rise is the inflation. Inflation rises even governments that were previously committed to budgetary discipline are spending freely to support households. Households, जितने भी लोग हैं, अपने एटलीस्ट उनके जो बेसिक खर्चे हैं वो ठीक से चलने के लिए, और इकोनॉमी में करेंसी मार्केट में चलती रहे, लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, तो जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो सब चलने के लिए, इकोनॉमी चलने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता रहता है, बजटरी डिसिप्लिन लगाने के बाद भी दे आर स्पेंडिंग फ्रीली, दे गिव मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। गिव माने डायरेक्टली जाकर पैसे नहीं देते हैं, बैंक्स में से वगैरह वगैरह लोन लेने के लिए पैसे अवेलेबल कर देते हैं लोगों को। एक्चुअली ऐसा होता है, वेन एवर द इन्फ्लेशन सिचुएशन इज देयर, means prices are rising continuously, that means inflation is there. At that time क्या होता है कि बैंक्स क्या करती है, अपना लोन जो है, लोगों को लोन अगर चाहिए तो पैसा कम देगी, यानी कम लोगों ने लेना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे विल हाई, दे विल increase the rate of interest so that many people will not take the bank loan, और बैंक लोन अगर नहीं लेंगे तो डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी ताकि इन्फ्लेशन कम हो। ये एक मेजर होता है, डिसिप्लिनरी मेजर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट स्टिल, द इन्फ्लेशन इज देयर, स्टिल गवर्नमेंट वांट टू डू द वर्क फॉर द पीपल, दे वांट टू गिव करेंसी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, दे वांट द करेंसी टू बी फ्री इन द हैंड्स ऑफ पीपल फॉर देयर हाउसहोल्ड पर्पसेस, राइट? Higher interest rates announced by central banks are expected to encourage moderate fiscal austerity. Simplicity. Fiscal simplicity means बहुत कम व्यवहार होने चाहिए ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके। इसके लिए वर्ल्ड वाइड जितनी भी सेंट्रल बैंक्स होती है, हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? इंडिया की सेंट्रल बैंक है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल बैंक्स जो वर्ल्ड वाइड होती है उनमें हमारी सेंट्रल बैंक सबसे इंपॉर्टेंट बैंक होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाई कर देगी ताकि टू मॉडरेट द फिस्कल ऑस्टेरिटी। फिस्कल मीन्स फिनेंशियल, ऑस्टेरिटी मीन्स सिंप्लिसिटी।
कम से कम व्यवहार हो, आर्थिक व्यवहार, राइट। तो आर्थिक व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, राइट। Correct. This is because in order to maintain stable debt levels while paying higher borrowing costs, government must either reduce spending or increase the taxes. गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, इसके आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है लोन्स के लिए, उसका रीजन क्या है, ताकि गवर्नमेंट ने भी कम से कम पैसे लोन लेने चाहिए मार्केट से, ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट भी कम लेंगे ना, और टैक्सेस भी इंक्रीज करेगी। टैक्स गवर्नमेंट अगर इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा कम जाएगा, ताकि महंगाई कंट्रोल में आ सके। इसके लिए आरबीआई ऐसा कदम उठाती है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसे निकालकर, यानी ज्यादा लोन उठाकर भी लोगों के हाथ में पैसे देना पड़ता है, मार्केट में पैसा रखना पड़ता है फॉर हाउस होल्ड पर्पज। विदाउट फिस्कल सपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस। यस, फिस्कल इफेक्ट, अगर पैसे नहीं है मार्केट में तो क्या होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस इट्स इफेक्टिवनेस। हायर इंटरेस्ट रेट्स may become inflationary rather than disinflationary. यस, डिसइंफ्लेशनरी मींस महंगाई कम करना, लेकिन उसकी बजाय कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती ही जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, जनरली एक एग्जांपल लेते हैं समझ में, कि आरबीआई ने क्या किया कि भाई मार्केट में महंगाई बढ़ गई, चलो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो आरबीआई के नीचे जितनी भी बैंक्स है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोई भी दूसरी शेड्यूल्ड बैंक वगैरह, वहां पर मैं अगर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, फ्रिज लेना है या फिर घर खरीदना है, कार खरीदनी है वगैरह वगैरह, तो वो बोलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ गया सर अभी, अरे कल तो कम था आज बढ़ गया, नहीं चाहिए मुझे। तो महंगाई यानी डिमांड जो है मार्केट में वो कम होगी। यह एक सिंपल सा तरीका है। तो डिमांड मार्केट में कम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जाएंगे, राइट, फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अब मेरी जगह गवर्नमेंट भी जाती है, बैंक से पैसा लेने के लिए, तो उनको भी बोला जाता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, अब क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है भाई, तो हमने पैसा कम लेना चाहिए ना, है कि नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया अभी। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी बोलता है कि फिर भी हम लेंगे, क्योंकि हमें लोगों के लिए खर्च करना है, क्योंकि लोगों के लिए जितना भी काम करना है, पब्लिक वर्क्स होते हैं कि नहीं, डैम्स या फिर इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, सब चलाने के लिए इतने सारे हजारों काम है हमारे पास, तो वो अगर हम स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, लोगों को दिक्कत आएगी। सो पब्लिक वर्क्स यानी द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक, तो दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक वर्क। पब्लिक वर्क के लिए हमें और पैसा चाहिए। तो इससे क्या होता है, इवन दो द रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए, फिर भी गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे लेने की वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ते गया। इंटरेस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन कम होना चाहिए और वो बन गया डिसइन्फ्लेशनरी, होना चाहिए तो वो इन्फ्लेशनरी बन गया, इवन दो द इंटरेस्ट आर increased. Now, the risk of monetary instability is greater when public debts rise. Public debt यानी गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्जा है उसको बोलेंगे हम पब्लिक डेथ, राइट, वो बढ़ गया as interest rates have a greater impact on budget deficits. Budget deficit यानी पैसों का डेफिसिट यानी कमतरता बोलेंगे हम उसे, पैसों का कम होना। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, पब्लिक डेट्स राइज होगी, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक तरीका है समझने का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस और inferences that can be drawn from the passage? Just a second. Ink. Okay. Now think of this and try to tell me the answer. I'll wait for your answer. So what are the statements? Shall I read the statement first? Then you think. Central banks cannot bring down inflation without budgetary support. Without budgetary support, they say. This is very important. Without that, can central bank, means RBI for India, cannot bring down the inflation, they are asking. Second, the effects of monetary policy.
depends on the fiscal policies pursued by the government. Yeah, the effects of monetary policy depends on the fiscal policies pursued by the government. Select the correct answer using the code given below. Okay, they are shown on the next page. One only, two only, both one and two, neither one and two. So let me see your answer. Shall I move to the previous page again so that you can read and tell me? Assumption 2, Deepak. D you're saying. Means only 2. Think again, think again. Only 2 you're saying. Your 2 is also right, but only 2 is correct or not? I'm not sure about it. Think again and then I'll tell you the answer. Central banks cannot bring down inflation without budgetary support, they say. Think of this. Central banks cannot bring down the inflation without budgetary support. Budgetary support means the budget provided by the government. The budget, the funds provided by the government. Without that, the central banks cannot bring down the inflation. Was it the part of this passage or not? Think of that. Actually, it is not an easy job for you because I'm not expecting the right answers. अगर right answers हमसे expect नहीं करते तो देते क्यों हो? समझने के लिए बस यूपीएससी को हमें समझना है बस. So this is the first step to understand UPSC and the kind of questions of UPSC. Okay, for that purpose I'm giving here the answers and just taking a trial. Do not decide that whether I'm able to solve this question or not, because obviously not. You are not able to solve these answers. I'm not expecting the correct answers from you right now, but after some days, definitely will give me the correct answers as your understanding will increase. So 1 and 2, both 1 and 2, neither 1 and 2. What is your answer? Now you're saying both 1 and 2. Hi Zainab, Fatafat. Can you give me the answer? Yeah. Pawar, Sneha. Sneha, what are you saying? Both means you are asking. Confused. Okay. Here, Divya. Deepak, I said last time. Why? Because the name was written like that, na? So I didn't understand. Only the name I read, not there. Divya. Hi Divya, how are you? Divya, you gave the answer both now. Sneha is saying C. Okay. Okay. I'm not expecting answer from you, Divya. Still you are giving. Oh, Zainab, you are also giving C. Wow. Both 1 and 2. Good. Great people you are, huh? You worth it. कमाल है. मैं तो चाहता था कि भाई आप रॉन्ग आंसर दे दो, पर करेक्ट आंसर दे दिया. कैसे? कमाल है जी, मुझे कमाल है. बहुत बढ़िया. Both 1 and 2, both the answers are right. Both the statements are correct. Good. You are the future officers, definitely. I'm sure. Congratulations, huh? Congrats. Wow, great. Even I was not able to answer when I was a student like you. Such kind of questions were very difficult for me. And you are giving me the correct answers. This is not fair, huh? Unfair. Because I was expecting that you should give the wrong answer. You should not give me the correct answer. But it's very nice. Thank you. Thank you very much. Now let's move the third passage. We often hear about conflicts among different states in India over river waters. Yes. In India, there are too many states. 29 or something, 28, 29, whatever. Now,
different states are there, and different states are having their borders also, and from the borders one river is passing from crossing one border and entering in another states. At that time the conflict start or begin. How? Suppose, let me write here. Okay, you might have understood. What is this? What is this? This is India. Okay, suppose Maharashtra is here, you know that Maharashtra is here, then Karnataka, Goa, here Andhra, Telangana, Tamil. Okay, now suppose one Godavari river is coming from here, originating in Nasik, flowing through this, like this, and going to what? Arabian Sea or Bay of Bengal? Where it is going? It is going to Bay of Bengal. At this time, what happened? It is crossing Maharashtra, then Karnataka, then different states. Suppose we are having our crisis here. Here one dam is built. So what will happen? All the water will be accumulated here. Most of the water will be accumulated here. Only a few quantity of water will be let down to the Karnataka and other states. Now the farmers living in Karnataka, what will happen to them? They will say that we have a very big river, but those Maharashtrians, they take a lot of water and very less of water is passed to us. Then what is the use of that water to us? What is the use of that river here? Now they take this question to Supreme Court or different tribunals. The tribunals, they are for river conflicts. Getting me not? So generally these conflicts, they go in Supreme Court only. Now ye Maharashtra and this Karnataka, they are having fight against each other, conflict against each other due to the river water. Okay, you might have understood the crisis now. Now let us move to the original part again. Now water crisis you understood very well. Okay, now of the 20 major river systems, there are 20 major river systems. Okay, out of those 14 are already water stressed. Pani kam hai unme, 14 already. Nearly 75% of the population lives in water. Population lives in water stressed region. जहां पानी ऑलरेडी कम है, रेन भी कम है, वहां पर 75% of population they are living. Only 25% people of population get sufficient water. Okay, now 1/3 of whom live in water scarce areas. उसमें तो water और भी कम है, 1/3 of them. तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है. Then climate change, the demands of rising population, the need for agriculture to keep pace with the increasing food requirements. If the population is increasing, obviously the food requirement is also increasing, and to keep the pace with increasing population, food requirement, here population भी बढ़ती जा रही है, खाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो फूड सप्लाई भी बढ़ना चाहिए. और फूड सप्लाई कहां से बढ़ेगा? एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर अगर बढ़ना चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? पानी. लैंड तो चाहिए, पानी भी चाहिए. गेटिंग मी नॉट? So ये है problem. And growing rate of urbanization and industrialization will further exacerbate water stress. Exacerbate. अब देखिए भाई, एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, फार्मिंग के लिए पानी चाहिए, बात समझ में आ रही है? अर्बनाइजेशन के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी पानी चाहिए. अब देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर किसी जगह पर करना है तो वहां पर पानी सबसे इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिसिटी, पानी, जमीन, ये सारी चीजें चाहिए, तब कहीं जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम करते हैं. राइट, इंडस्ट्रीज काम करेगी. अब इंडस्ट्रीज काम करेगी तो उसके सराउंडिंग में अर्बन एरियाज भी डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज द वर्कर्स, वेयर विल दे लिव? They will live in an urban area, and where all the facilities, sanitation and all the facilities, water supply facilities, okay, वो सब देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को. और वाटर सप्लाई अगर वहां पर देना पड़ेगा तो क्या होगा? वाटर स्ट्रेस और बढ़ेगा. That means water is required for agriculture, then water is required for urbanization, यानी जहां पर लोग शहर बनाकर रहते हैं, शहरीकरण,
ओके, सो नागरीकरण यानी एक शहर बनाना और शहर में सारे लोग रहना, राइट। और उसके बाजू में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए और अर्बनाइजेशन के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए, ये तीन चीजों के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो ऑलरेडी पानी कम है और जरूरतें बढ़ रही हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। यस, दिस वाज द करेक्शन एट दैट टाइम आई टोल्ड यू, ओके Dhaneshwar, this was the correction at that time. Only state was seen, okay. Water is a state subject and not a union subject. Now, what is the subject here? Sir, subjects are there. In our school, there is, this subject word is there. Subject is used in many ways. Subject means, in your school, mathematics is a school subject, science subject, history subject. But here, state subject means what? जितने भी state है इंडिया के अंदर, उनका विषय, यानी स्टेट के क्या बोलेंगे उसको, ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, स्टेट के पास आएगा ये सब्जेक्ट। कौन सा? वाटर। यानी एग्रीकल्चर के लिए जो पानी चाहिए या किसी और पर्पस के लिए पानी चाहिए गवर्नमेंट को एक्सपेंड करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट विल से भाई ये काम, ये जो सब्जेक्ट है पानी हमारा नहीं है, पानी स्टेट सब्जेक्ट का है, तो स्टेट को पूछो जाके, स्टेट देगा पानी, देगा नहीं देगा वो उनको जाके पूछो, राइट। तो दैट इज नॉट आवर वर्क। तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जैसे रिवर्स चैनलाइज करना है, बड़े बड़े रिवर्स, शुरू में हमने डैम्स वगैरह बनाए वगैरह, बस उतना ही हमारा काम है। लेकिन वाटर को लेकर जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह है वो अमंग स्टेट्स, स्टेट्स के बिटवीन, दो स्टेट के बिटवीन या फिर कई सारे स्टेट अगर, तो अमंग स्टेट्स दे विल रिजॉल्व देमसेल्व्स, अदरवाइज दे विल गो टू द कोर्ट ऑल्सो, बट वी कांट इंटरवेन। देयरफॉर द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, it will not intervene in river disputes, okay. Now, except in matters concerning the regulation of interstate rivers, right. interstate rivers जहां होती है वहां पर थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन उस स्टेट के अंदर पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है वगैरह, उसमें यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर। नाउ द की to ensuring a balance among the competing demands of various stakeholders is to adopt a river basin based approach for allocating water among the constituents, regions and states. Yes, ये है key to ensuring a balance among the competing demands. डिमांड्स तो बढ़ती जा रही है, जबरदस्त डिमांड बढ़ती जा रही है, हर स्टेट की डिमांड बढ़ती जा रही है पानी के लिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रिवर बेसिन बेस्ड अप्रोच। रिवर बेसिन यू नो वेरी वेल, व्हेन अ रिवर फ्लोज थ्रू एन एरिया, तो उसके सराउंडिंग में जितना एक टेरिटरी है वहां तक पानी पहुंचता है या फिर वहां तक पानी का इस्तेमाल किया जाता है, दैट होल पार्ट विल बी कॉल्ड एज वाटर बेसिन एरिया. So river basin based approach for allocating water among the constituent regions and states. Allocating a fair share of water requires assessment based on objective criteria. सबसे पहले assessment चाहिए, study चाहिए कि रिवर का पानी किस क्षेत्र में ज्यादा यूज होता है, इस रिवर में वो पानी आता ही कितना है, उसका एग्रीकल्चर के लिए कितना इस्तेमाल है, इंडस्ट्री के लिए कितना है, अर्बनाइजेशन के लिए कितना है. दिस असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सच एज द स्पेसिफिक characteristics of the river basin, the size of the dependent population, existing water use and demand, efficiency of water use, ये सारे criterias है over which the assessment has to be done, and projected future requirements and the environmental needs of water, river and aquifers. Aquifers means पानी जो कि जमीन के अंदर है, that we get from generally from the tube wells and those, right? So what is there? The question, is there any question? What is stakeholders? So the different stakeholders here are those who are connected or concerned with the water of that river. That means a state is a stakeholder. The state government is the stakeholder here. Then the agricultural department in that particular area, that is also a stakeholder, right? So whoever is concerned or connected with the use of that water of the river, they are called as stakeholders, right? Now, let's move to the question. What is the question? Question is here, which one of the following statement best reflect
the most rational, practical, and immediate action requires to ensure the fair and equitable allocation of water among different stakeholders? This is the question. अब देखते हैं कौन से है, राइट? अब देखिए, स्टेक होल्डर यानी कौन कौन सी चीजें, कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो देखना है हमें. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, a national pragmatic legal and policy framework for water allocation should be made. Let us try to understand the meaning of this statement first, then I'll give you time to decide. A national, first of all, national level, not state level, okay? A national pragmatic, practical means actual, on ground level reality will be checked, okay? Pragmatic, then legal and policy framework. Legal policy should be there. So the laws, they has to be laid down properly, correctly, act, laws. So the legal way, the people should understand what is the constitution saying about this, what are the laws saying about this, okay? Sharing of water, for water allocation should be made, okay? This is the first thing. Then all the river systems of the country should be linked and huge aquifers created. ये दूसरा सॉल्यूशन दिया है उन्होंने. इज इट करेक्ट और नॉट? तो फर्स्ट वाला तो आपने देख लिया. सेकंड वाला क्या है कि जितनी भी रिवर्स है, ऑल द रिवर्स इन कंट्री, दे हैज टू बी लिंक्ड विथ ईच अदर, और ज्यादा एक्विफर्स, और ज्यादा पानी निकाले जमीन के अंदर से, ताकि लोगों को जरूरत ही ना पड़े, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. ये एक दूसरा स्टेटमेंट है. यू विल हैव टू थिंक ओवर दिस. देन सी, वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस. क्या वाटर चैनल्स यानी कनेक्टिंग, कालवा जिसे हम बोलते कि नहीं, राइट? कालवा मीन्स कनेक्टिंग. Small water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created. अब कोई एक एरिया है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पानी कम है, तो वाटर चैनलाइज करो, इनको पानी दे दो इधर. तो ये रिवर है बड़ी, यहाँ से ये चैनल्स निकल रहे छोटे छोटे, राइट? तो जहां पर पानी ज्यादा है वहां से उस क्षेत्र में लेके जाइए पानी जहां पर पानी कम है, राइट? वाटर डेफिसिट यानी कम पानी, और सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, मोर देन नीडेड. तो ये एक उपाय है. और लास्ट है, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड्स ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी मेड. व्हाट इज दैट वर्ड हियर? इट इज नॉट सीन क्लियरली. I'll see here. Should be reduced. Okay, to mitigate water crisis यानी पानी की समस्या से जूझने के लिए water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced. तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए जितनी भी वाटर डिमांड है उनको कम करना चाहिए. ये तो मुझे समझ में नहीं आया. फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग है. He is already wrong. Don't think over this, because वो बोल रहे कि भाई एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए तो ठीक है, लेकिन नहीं देंगे, कट करो. ये तो कोई उपाय हुआ ही नहीं. तो डी इज ऑलरेडी रॉन्ग. ओके, थिंक ऑफ दिस ए, बी एंड सी. So what should be the correct answer? I'm waiting for your answer. Yes, Shivani, where are you? Good morning. Give me the answer fast. Men do not commence for fear of obstacles. The middle one, do not abandon what they. Okay, you are giving me the meaning of that thing. But here we are. Now tell me the answer. If you have read the passage. Sorry for being late, you are saying. I give you the punishment of Sanskrit shlok, but now we don't have time that much. So you just give me the correct answer here. I have shown you this passage to all of you. I explained also. Now I want the answer from you. Sneha. You want to know the main question here?
See, this is the question. Once again, I'll read the question. Which one of the following statement best reflects the most rational, practical, and immediate action required to ensure the fair and equitable allocation of water among different stakeholders? Among different stakeholders. Here the stakeholders are states, suppose. States के बीच हमें पानी का एलोकेशन, पानी का क्या बोलेंगे उससे, पानी बांटना, राइट, फेयरली, कम या ज्यादा नहीं, राइट, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके उपाय नेक्स्ट स्लाइड में दिए हैं, तो उनमें से क्या करेक्ट है? फर्स्ट इज अ नेशनल प्रैग्मेटिक म्हणजे प्रैक्टिकल लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ वाटर एलोकेशन शुड बी मेड, ये सबसे पहला वाला है. सेकंड, ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वीफर्स क्रिएटेड. तो देखिए, सबसे पहले आइडिया क्या है, यूपीएससी का करेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है? बहुत सिंपल है. वो लगाने के लिए एक ही है, आपको सोचना है इनमें से कौन सा ऑप्शंस, which of the options given here are given in the passage? Are they discussing this in the passage? That is the best way to find out the answer. So here, if they say all river systems of the country, they should be joined with each other. Is it any mention like this in the passage? From that you will say, sir, मुझे तो लगता है कि भाई सारे रिवर्स जोड़ दिए जाए. हाँ, मुझे भी लगता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. लेकिन is it given in the passage? That has to be the first ever criteria. Think over that. Then only we should consider that thing. Then see, water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created. जिस स्टेट में ज्यादा पानी है वहां से लेकर जिस स्टेट में कम पानी है वहां से चैनलाइज करो. रिवर्स बह रही है लेकिन रिवर्स की वाटर को चैनलाइज करो, राइट? तो क्या ये भी दिया है पैसेज के अंदर? Think over this and tell me the correct answer. Now, let's move to the options. Oh. You got the idea. On the first day, I'm very happy. On the very first day of comprehensions, you are giving me the correct answers. This is the insight. This is the insightful thing, which is happening here. I gave you the clue and you are going along that way. If you are able to solve this kind of toughest questions, they are considered, okay? Because they are of UPSC level. UPSC के questions हैं. ऐसा नहीं कि यूपीएससी की धरती पर हमने थोड़े से सिंपल वगैरह आपके लेवल के क्वेश्चन, नहीं. आई हैव टेकन डायरेक्टली दिस क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर. So you should understand who you are, what is there inside you, who is there inside you. आपके अंदर कौन है? आपके अंदर एक यूपीएससी एस्पिरेंट बैठा है, खतरनाक. वो बोलता है कि नहीं मुझे करना है, और आप बोल रहे कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं बहुत छोटा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, यूपीएससी क्या है, बहुत टफ है. लोग तो बोलते भाई दुनिया की बहुत, मालूम है दुनिया की तो नहीं लेकिन इंडिया की सबसे टफ एग्जाम है यूपीएससी. बट आई एम श्योर you are the one who is going to crack it. Why? Because you are answering such kind of questions. ये क्वेश्चन बहुत टफ है. आज भी अगर कोई यूपीएससी के किसी एस्पिरेंट को, यानी जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर जो अंडर ग्रेजुएट है, उसे अगर एक क्वेश्चन दिया जाए ना, तो डेफिनेटली ही विल से नहीं सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत टफ है, ये तो हम कैसे करेंगे सर, कितना टफ. अरे भैया, सबसे पहला जो जबरदस्त क्राइटेरिया यूज करना है वो करना है कि भाई इनमें से जो स्टेटमेंट दिया है वो पैसेज के अंदर है क्या, उसके ऊपर डिस्कशन किया है क्या, नहीं किया है, छोड़ दो ना उसे. और धड़ धड़ धन 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 सारे के सारे करेक्ट आंसर सारे आपके. क्या बात है, गुड. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. यस, नाउ लेट मी से हियर, one or two answers may go wrong. First of all, Neha, congratulations, you got the correct answer. Yes, then Shivani, you also got the correct answer. Shivani, भाई तेरे को तो जबरदस्ती मार के वगैरह यूपीएससी क्रैक कराना ही है मेरे को. आई विल फाइंड योर पेरेंट्स एंड आस्क देम कि जबरदस्ती ये संस्कृत वाली को जो है ना तो पहले यूपीएससी पास कराओ, और बाद में शिवानी, हाँ, यू गॉट द करेक्ट आंसर.
ये नाम जो है तो समझ में नहीं आ रहा है. UPSC Clover 1245. Hmm? But whose name is that? UPSC lover. हाँ हाँ, UPSC Clover. क्या बात है, सुंदर. UPSC lover. Who are you actually? Last time I heard your name. Once again, please mention your name. UPSC lover. Your answer is also right. Again, Shivani's answer I want to say, I see here. Zainab, you are giving A, correct? Wow, great. One more is there. Right. One more power is there, right? Good. A option. Good. Okay. Divya is not C, huh? It is A actually. A is the correct answer. Congratulations all. A वाले लोग. Congratulations to all A वाले लोग, हाँ? Thank you for the answer. बहुत बढ़िया आंसर, बहुत अच्छे. चलो, one more we'll see. One only will be sufficient. I know 5 are there, but this one I'll be able to take, and if possible, 5th also I'll take. Thank you. Okay. Marun Mutkun. बग तो आता. Okay. In a robust democracy, zabardast democracy, dynamism is there, not stagnant. Stagnant, you understand? Stagnant, yani no more activities are seen, ekdam slowly, Dumbo like. Robust, zabardast democracy, okay? All the values are there, democratic values. People are aware of the democracy. People are ready to come on the roads for fighting also for the good purpose, for the good cause. That is the robust democracy. Reality, however, inconvenient it may be. However, it is inconvenient, finds expression both in the speeches of political leaders and in other social forms of assertion. Yes. Robust democracy. Okay. In a robust democracy, reality comes out to the mouth of political leaders. My God. Sir, political leaders, do they speak truth? Is that the question in your mind? But many times, suppose one is saying good, another is saying bad. So one of them has to be good, na? Correct, na? True, na? That one is expected here. However inconvenient it may be, finds expression both in the speeches of the political leaders and in other social forms of assertions. जहां पर भी हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज, सोशल फॉर्म्स, राइट, वहां पर रियलिटी, ट्रूथ आ ही जाता है बाहर हर हाल में, बिकॉज इट इज रोबस्ट डेमोक्रेसी. वो कोई सोई हुई डेमोक्रेसी नहीं है, वो कोई मंद डेमोक्रेसी नहीं है, एकदम रॉबस्ट है, जबरदस्त. तो कहीं ना कहीं से रियलिटी आ ही जाती है सरफेस पर. गेटिंग मी नॉट? नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी मस्ट बी ट्रांसपेरेंट थ्रू इट्स circulation by the media as well as through its augmentative articulation in a deliberative democracy. Deliberative democracy, जहां पर जानबूझकर डेमोक्रेटिक वेज से काम किया जाता है. तो होता यह है, द एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी मस्ट बी ट्रांसपेरेंट थ्रू इट्स सर्कुलेशन बाय द मीडिया. मीडिया में सर्कुलेट होनी चाहिए क्या? रियलिटी. द ट्रूथ हैज टू बी circulated everywhere, up to every person. And now it is very easy. Why? Because today we are using not only the print media. Print media was being used. Even today it is used, no problem. But at that time, in those days, only print media was available. Some 1980s, 70s. Okay. After that, TV also came, television. So on television, at least national channel was there. National, DD National, you say. Only the government related and government favored news were shown. Getting me not? But after that, what happened? Different forms of news channels also come.
the television. And that's why we were able to see the different opinions also. But after that also we found in same so many different countries, we find like this, the picture, that the news channels, that media is also controlled by the government, ruling government at that time. The social media is there. Now social media cannot be controlled by any authority in the country because it is free from all the measures, okay, control. And whatever I think about the government, whatever I think about anything happening in the country, I can express my own ideas on the social media platform. Getting me not? And that is the biggest platform available today. And that's why only we have seen what a recent event up to yesterday it was going on. And it resulted in the resignation of a cabinet minister, central government minister, right? So that is the effect of social media here, right? So reality comes out. The reality comes at the surface at any time. Only the thing is required what? The democracy has to be robust. The democracy should be alive. The people should come to know the value of democracy. And at that time, no government can rule over you in whatever way they like. Okay? A responsible media, normative responsible media, through its communicative influence, has the responsibility to circulate the content of the reality without distortion. Without distortion. What is the meaning of distortion? Distortion means to change the reality. Whatever the reality is there, but I want to mold the reality into wrong ways, right? I want to convey to the people wrong happening, right? तो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करना उसे कहते हैं. तो रियलिटी को विदाउट डिस्टॉर्शन, whatever the content is there, it has to be circulated in true manner, in real manner, and that is the responsibility of the normative media. Media की ये responsibility है. Okay. Now, which one of the following statements has best reflects the central idea of the passage? What is the central idea of the passage? वो हमें देखना है statements के जरिए. Now, let us read the statements here. Okay. Responsible media should not distort the real in ideal democracy. Ideal democracy, they say. आदर्श democracy, we are talking about. तो आदर्श डेमोक्रेसी के अंदर रिस्पॉन्सिबल मीडिया ने रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए, रियलिटी को खराब नहीं करना चाहिए, जैसा रियल है वैसा ही दिखाना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट स्टेटमेंट. So you think over that. Then fake news seems inherent in the life of an ideal democracy. अगर डेमोक्रेसी आइडियल भी है, आदर्शवादी डेमोक्रेसी है, तो उसमें फेक न्यूज आती ही रहती है. क्या यह स्टेटमेंट दिया है पैसेज में? आपने सोचना है. I'm not responsible for that, okay? I do not know the answer also. There should not be any kind of restrictions on the freedom of expressions in an ideal democracy. Ideal democracy के अंदर मीडिया के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पर कोई पाबंदी नहीं चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट है, राइट? आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, द स्टेटमेंट इज सेइंग लाइक दैट. Then irresponsible media and political leaders cannot be effectively controlled in an ideal democracy. Irresponsible media या फिर irresponsible political leaders जो होते हैं, they cannot be effectively controlled in democracy या फिर ideal democracy. क्या यह स्टेटमेंट दिया है? सोचना है आपने और बताना है कि क्या करेक्ट आना चाहिए. So get me the correct answer, please. Shivani, what are you saying? Let me read your message. Sometimes some news is not fully true or is shown in a way that changes people's thinking. That's why we should always check the news from trusted sources before believing it. Yes, Shivani, you are giving the correct answer. But that answer, I'm not saying that is the answer of this passage, okay? But you have conveyed a very beautiful message. I like it. Next. I think D. Yeah, UPSC lover, please mention your name.
whoever is UPSC lover here, okay, like okay, Shreya Shinde, such a brilliant student, huh? Shreya. Okay. The answer started coming. Shivani gave the first answer. Shivani is saying option A. My God, Rudra Pawar is also giving the answer A. I'm not saying that answer A is right now. Okay, I'll wait for answers first. Then I'll tell you. Who's there? Okay. See, Shivani is saying option A, but I'll not declare the answer right now. Then Rudra Pawar is saying option A. Yes. Then Divya, you are also saying option A. Zainab, it's not Zainab. The name is seen here. Zainab is saying A. Okay. Shreya, I got your name. I understood. Shreya, what is your answer? Then Cordeward 6879 is written here. I don't know the name. He's also saying A. All are you saying A? Then what is the use of saying any other option then? Why should I try to find out another option? अगर सबके सब बोल रहे हैं ऑप्शन ए, तो चलो भाई मैं भी ए ही बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं. आपको तो पता है. You know that I know nothing and you know everything. And that is the problem here. Now here Shivani, Shreya, they know very well what I'm talking about, because daily I teach them in another class. Where who am I, Shivani? Italian people. Shivani recognized me very well. I'm not Maharashtrian, I'm Italian. Okay. And the Italian people are more talented, intelligent than you Maharashtrian people. But always what happened, always these Maharashtrian people defeat our Italian people by giving the correct answers always. Then what to happen? What to do then? Then that is the real problem of myself. We, the Italian people, are always greater than you want to prove actually, but never it happens so. That is the major problem with me. Okay. Shriyash Kodewad. Okay, Shriyash Kodewad. You also said answer A. Panditji also. That is another identity of myself. So Shivani called me Panditji. Shreya also called me Panditji. Panditji and Nana also. Oh my God. Fourth identity. Yes. Multi-identity. Yeah. Great. So I'm very happy that you all are giving the correct answer. But I was not expecting these answers from you. The people like you. You are too small people to give these kind of correct answers. And please let me tell you once again. These passages I have taken from previous year's question papers of UPSC. That means कोई भी क्या बोलेगा, सर ये बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों के हिसाब से छोटे लेवल के क्वेश्चंस बनाओ ना इतना. लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इनको मैं सबसे पहले सबसे टफ क्वेश्चन दूंगा, उल्टा चलूंगा मैं. सबसे पहले पता तो चले. और टुडे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल बी रॉन्ग, और बाय चांस कोई आंसर आ गया करेक्ट तो करेक्ट आ गया, इस तरह का चित्र रहेगा, इस तरह का कोई पिक्चर आएगा सामने, ऐसा मैं सोच रहा था. विच वाज रॉन्ग. आई वाज रॉन्ग टोटली. I am getting almost all the answers correct. How is it possible? Because each one of you is having that officer inside you. So please think over this. Do not run away from UPSC. Okay.
Whatever you want to become, please become. Engineer, doctor, everything you can become. But think over this, that one great person is living inside you and that person has given me the answer. तो उसकी तो सुनो, कम से कम मेरी नहीं सुनो, उसकी सुनो, आपके जो अंदर है वो, right? So A option is right. A is the correct option. Responsible media should not distort the real in an ideal democracy. Whatever the reality is there, उसको distort नहीं करना चाहिए. This is the message given in this passage. चलेंगे आगे. Is that over? Time is also over. So, bhai, I'm very happy. Is correct because the passage says the media should tell the truth and should not change or hide the real facts. Right. Absolutely correct. Correct. All of you, congratulations. Congratulations to all for A. Okay. I'm very happy with you all. And I'm requesting you, please solve the MCQs daily sent to you. Okay. और क्या करना है, सबने एक काम करना है. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको एक करना है. Whatever the MCQs you are solving now, you are getting the score also. Get the screenshot of that thing or send it to the office number. Or see, don't send it to the office number. Directly send it on the group so that other people will also know that you have solved how many and how many are correct. Okay. So everyone, प्रत्येक हर एक स्टूडेंट का एक काम है, प्रत्येक स्टूडेंट का काम है, प्रत्येक हर एक मींस सेम. तो हर एक स्टूडेंट will do this thing right from today. Means tomorrow will say history, whatever is taught today. अब आज का तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ये पूरे वीक में आज का यानी संडे का लाइव सेशन का आपको कुछ नहीं मिलेगा क्वेश्चंस. व्हाई? बिकॉज वी आर सॉल्विंग द पैसेजेस हियर एंड पैसेज के वापस क्वेश्चंस इन्हीं पैसेज पर नहीं बनेंगे. सो दैट वो तो आपके लिए नहीं है. लेकिन न्यूज, डेली न्यूज आती है, उसके सारे एमसीक्यूज आपने सॉल्व करना ही है प्लीज. ओके, वो सॉल्व करके और सबमिट करना है बस. और सबमिट करके जितने जो भी आपके करेक्ट आंसर आते हैं, इफ पॉसिबल सेंड देम ऑन द ग्रुप सो दैट वी विल कॉन्ग्रेचुलेट यू. बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए ना कि दिव्य ने सॉल्व किया है, भाई कितना अच्छा है, किसी और ने भी सॉल्व किया है, राइट? रुद्र ने सॉल्व किया है. तो एवरीवन विल सॉल्व दैट and you will be appreciated on the group also. Getting? So connectivity will increase and your competition will also increase. Healthy competition, healthy connections will increase and definitely will become officer also tomorrow. Getting? So all of you, once again, I am requesting you all to solve all the MCQs sent to you. Recorded videos, MCQs also. So you have to see the recorded videos first. After that, solve the questions and send them immediately to make you understand what is your score. And we should also understand what is your score, so as to appreciate your work.